Morning everyone. Hope you all are fit and fine students. Yes beta, today we will revise tenses with the help of some worksheets given to you in your practice book from chapter number 5, Tenses part 1. So students, before we start this chapter, let's see what is a tense. The tense of a verb shows the time when an action takes place. Okay, the tense of a verb shows the time when an action takes place. And students, there are three tenses. First one, present tense, then past tense, and then future tense. Now students, look at these sentences and find out what's wrong with these sentences, beta. As you have done earlier tenses also. So now students, look at these sentences and try to find out. Yesterday I am playing football. Tomorrow I went to the zoo. At the moment I have washed the dishes. Yesterday I am playing. Yesterday is showing past tense. So what's wrong here? Am playing. Tomorrow I went to the zoo. Tomorrow we are talking about future. So what's wrong here? Went. At the moment I have washed the dishes. At the moment हम अभी present moment की बात कर रहे हैं बेटा. So it's present tense. Okay. What's the mistake in the past one? Yesterday I am playing football. Am playing. In second one, tomorrow I went to the zoo. Went is wrong here. In third one, at the moment I have washed the dishes. Have washed. These are the wrong words. Now students, how can we correct it? हम इसे correct कैसे कर सकते हैं students? Let's see what's the correct sentence. Yesterday I played football. Okay, yesterday I played. Second form we use. Okay, yesterday I played football. Tomorrow I'm going to the zoo. At the moment I'm washing the dishes. Okay, like this students. Yesterday I played football. Tomorrow I am going to the zoo. At the moment I am washing the dishes. Now students, let's see. This following table students will help you understand various forms that can be used to talk about future. कि हम future tense के लिए बेटा कौन कौन सी forms को अलग तरीके से use कर सकते हैं. ये students first one you can see forms future with will or shall. बेटा जब हम simple tenses कर रहे हैं then बेटा we use will and shall for the simple future. तब हम बेटा will और shall का यूज़ करते हैं simple future को शो करने के लिए. और उसको कैसे यूज़ करते हैं बेटा? प्रॉमिस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल बेटा आई विल श्योरली हेल्प यू. हम बेटा कुछ प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कुछ भविष्यवाणी कर रहे हैं. देन अगेन स्टूडेंट्स वी कैन यूज़ मैन विल रीच मार्स सून. फॉर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर इवेंट्स इन जर्नल वे. जर्नल तरीके से बेटा हम फ्यूचर की कोई भी इवेंट की बात कर रहे हैं फ्यूचर की. देन अगेन स्टूडेंट्स वी कैन यूज़ मार्केट्स विल रिमेन क्लोज ऑन मंडे. लाइक दिस स्टूडेंट्स वी कैन फ्रेम द सेंटेंसेस. Now beta, let's see next one. Future with going to. हम बेटा फ्यूचर को शो करने के लिए गोइंग टू वर्ड का भी यूज़ करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल बेटा टू प्रेडिक्ट दैट द प्रेजेंट सिचुएशन विल कॉज समथिंग इन फ्यूचर. एक इंडिकेट देना. ओके, एक इंडिकेशन होना कि प्रेजेंट सिचुएशन जो है उसका कुछ ना कुछ नेक्स्ट में जो है फ्यूचर में इफेक्ट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल बच्चे द वॉल इज़ क्रैक्ड. ये प्रेजेंट सिचुएशन है कि वॉल क्रैक है. द वॉल इज़ क्रैक्ड. ठीक है. ए सिचुएशन विल कॉज समथिंग इन फ्यूचर. इससे फ्यूचर में क्या होगा बेटा, क्या सिचुएशन हो जाएगी? इट इज़ गोइंग टू क्रम्बल सून. गोइंग टू हमने किसके लिए यूज़ किया बेटा? टू शो फ्यूचर. ओके. टू स्टेट एन इंटेंशन कि हमारा क्या इरादा है बेटा, उसके लिए भी हम कई बार यूज़ करते हैं गोइंग टू फ्यूचर शो करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल बेटा I am going to buy a new car. Okay, I am going to buy a new car. Now students, next one, future with present continuous plus time expression. हम future tense को show करने के लिए बेटा present continuous का भी यूज़ करते हैं. उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे बेटा? time expression. For example बेटा फॉर टॉकिंग अबाउट इवेंट्स प्लान फॉर नियर फ्यूचर. कि हम नियर फ्यूचर के लिए कोई भी इवेंट्स प्लान कर रहे हैं बेटा, कोई भी काम प्लान कर रहे हैं तो हम बेटा उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल बेटा आई एम विजिटिंग माय डॉक्टर टुमारो. ओके, हम फ्यूचर को शो करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा?
present continuous with time expression. Time expression क्या है बेटा यहाँ पर? Tomorrow. Okay. I am visiting my doctor tomorrow. Then बेटा future with simple प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट टेंस को बेटा हम कई बार यूज़ करते हैं फ्यूचर शो करने के लिए. कहाँ यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? लिसन. फॉर टॉकिंग अबाउट इवेंट्स हैपनिंग अकॉर्डिंग टू अ शेड्यूल. एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग बेटा जो इवेंट्स बार बार हो रही हैं. ओके. फॉर टॉकिंग अबाउट इवेंट्स हैपनिंग अकॉर्डिंग टू अ शेड्यूल. For example, programs, timetables, etc. in the future. And here students, one example is given to you. The president visits the city tomorrow. Okay. The period gets over at 10:30. एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग बेटा जो शेड्यूल बना हुआ है शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो काम हो रहा है बेटा टाइम टेबल है कुछ भी. देन स्टूडेंट्स वी अगेन यूज फ्यूचर विथ सिंपल प्रेजेंट. नाउ स्टूडेंट्स 3 sentences are given to you. Find out whether they are present, past or future. कौन सा टेंस है बेटा? फाइंड आउट. ओके. Yesterday I played football. Tomorrow I am going to the zoo. At the moment I am washing the dishes. Yesterday I played football. Which tense? Past. Tomorrow I am going to the zoo. Future. At the moment I am washing the dishes. Present. Okay students. Now beta let's move on to the chapter from your practice book. Chapter number 5. Tenses part 1. Or read the passage given below. Snoopy has an adventure. Beta, you can open your book side by side and beta try to understand. Okay. Snoopy is a lazy dog. He sleeps for more than 12 hours a day. Mrs. Arya scolds him whenever she finds him sleeping. One day, Snoopy was dozing in the sunshine when he suddenly saw a cockroach. He got scared, वो डर गया, and started barking at the insect. The family members ran down to the spot and saw that Snoopy was jumping and barking at something which they could not see. Mr. Arya tried to stop Snoopy, but he didn't stop barking. Mrs. Arya warned him that she would not give him dinner. Hearing this, he softened a little. He looked towards Mrs. Arya in a pleading manner and tried to tell her that he was trying to catch a thief. He had done a good deed, but no one understood what he was trying to convey. Nicky caught hold of Snoopy and pulled him in. Now beta read the words or phrases given in bold carefully. And see students, different verbs are in different फॉर्म्स. डिफरेंट वर्ब्स को हमने यूज़ करे बेटा डिफरेंट फॉर्म्स में. फॉर एग्जाम्पल बेटा वॉज डॉजिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. स्कूल्स प्रेजेंट टेंस. सो रैन अगेन बेटा पास्ट टेंस. वॉज जंपिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस. डिड नॉट स्टॉप पास्ट टेंस. लुक्ड अगेन पास्ट टेंस. हैड डन past perfect. Then was trying past continuous. So students read it once again and try to understand different verbs are in different forms we have used here. Now beta worksheet number 2, one chart is given to you here. Beta read it very carefully. Okay, read it very carefully and try to understand this chart. For students, the first one, for simple present beta we use verb go और गोज़. जब हम बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं द स्टूडेंट्स वी यूज़ गो और गोज़ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. एंड बेटा इफ़ वी वांट टू मेक इट इंटेरोगेटिव और नेगेटिव देन वी यूज़ हेल्पिंग वर्ड डज और डज नॉट. ओके, डज गो और डज नॉट गो. वन मोर वर्ब इज गिवन हियर स्टूडेंट्स, वर्क और वर्क्स. देन स्टूडेंट्स इफ़ यू वांट टू मेक इट इन पास्ट, गो वर्ब है बेटा, इसको आपको पास्ट में कन्वर्ट करें देन वी कैन यूज़ सेकेंड फॉर्म. Go, went. Okay, second form is went, then did go, did not go, then worked. And for students future we use helping verb will or shall. बेटा future show करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे? will और shall. will go, shall go. will work,
shall verb. Now students, come to continuous part. For present continuous beta, we use is, am, are as a helping verb. Main verb के साथ हम बेटा is, am, are use करेंगे to show present continuous. जैसे I am going, okay, he is going, like this. Am going, is going, are going. It's present continuous. Am working, is working, are working. Again present continuous. बेटा जब हमें इसी को पास्ट कंटिन्यूस पे कन्वर्ट करना है तो बेटा हम हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे. इज़, एम, आर की जगह बेटा हम सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, वॉज या वर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. बेटा अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हम एक पर्सन या एक थिंग की बात कर रहे हैं बेटा, देन वी यूज़ वॉज गोइंग for past continuous, and we are talking about future beta, future continuous, sorry, past continuous, then we use students were going with the plural. Okay, was going, were going, was working, were working. Then students, for future we use shall be going, will be going. Then beta come to perfect tense. Present perfect. Present perfect के लिए हम बेटा क्या यूज़ करेंगे, हैज़ और हैव. और हैज़ और हैव के साथ बेटा हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म. हैज़ गोन, हैव गोन, हैज़ वर्कड, हैव वर्कड. बेटा अगर सिंगुलर है तो हैज़ और प्लूरल है तो हैव. ओके, देन बेटा पास्ट टेंस जब हमें बनाना है, पास्ट परफेक्ट, देन वी यूज़ हैड, HAD, हैड गोन, हैड वर्कड. And then students, for future, will have gone, shall have gone, will have worked, shall have worked. Like these students, okay, try to read it and try to understand it. Okay students, read this chart and try to understand it. Now refer to the tense chart given above and fill in the blanks with appropriate alternatives from those given in the brackets. The first one has been done for you. बेटा टू ऑप्शंस गिवन है आपको. ओके, टू ऑप्शंस आर गिवन टू यू. चूज़ वन ऑप्शन विच इज़ अप्रोप्रिएट, जो आपको करेक्ट लगता है बेटा, चूज़ दैट एंड पुट अ टिक, और स्टूडेंट्स यू कैन राइट डाउन. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन बेटा. शी इज़ गोइंग टू द मार्केट. हियर इज गोइंग इज करेक्ट. सेकेंड सेंटेंस स्टूडेंट्स, रवि हैज़ डैश टू स्कूल. रवि हैज़ गोन. Okay, write down gone here, or we can put a tick on gone. Third one students, Lena will be walking. Okay, Lena will be walking on the machine at this time tomorrow. Then fourth one, by 11 a.m. they had done half the work. They will be going for an outing tonight. She goes to school daily at 7 o'clock. Seventh one students, my mother has gone to the market. My sister is working in the kitchen. They were playing. Okay, they were playing in the park yesterday. Two options are given beta, are and were. Yesterday is given here. It shows past tense. Yesterday क्या show करे बेटा, past tense. So we will write down were. Okay, they were playing in the park yesterday. And next one students, the girl has been playing with her doll for 2 hours. The girl has been playing with her doll for 2 hours. Like this students, try to complete this worksheet. Now beta, let's start with the worksheet number 3. Refer to the tense chart and identify the errors in the following sentences. Underline the errors and rewrite the sentences using the correct forms of the verbs. The first one has been done for you. Yes students, here in these sentences one error is here. Okay, इन सभी sentences में का कोई ना कोई error है, कोई ना कोई mistake है. You have to underline that error. Okay, सबसे पहले उस error को find out करिए बेटा. Then बेटा underline that error and after that बेटा rewrite the sentence. Okay, दोबारा से उस sentence को बेटा correct करके write करना है. Okay, look at the first one students. They are eat food. Eat is wrong here, so underline the word eat and write down eating. They are eating food. Okay, they are eating food. Next beta, the cat has entering the kitchen. Entering is wrong here. Underline the word entering and write down beta, the cat has entered.
Okay, the cat has entered the kitchen. Then beta, the teacher will be teaching the class at this time tomorrow. Been, B-E-E-N, been. It's wrong here. Underline the word been and write down the correct sentence. The teacher will be teaching. The teacher will be teaching the class at this time tomorrow. Then beta, fourth one, the boys will finish the project by tomorrow morning. Underline the word will and write on will have. The boys will have finished. Okay, the boys will have finished the project by tomorrow morning. He has going to the temple at this time. He will be going. Underline the word has and write down will be. He will be going to the temple at this time. Next sentence students, sixth one. These days I are writing. I के साथ बेटा हम are लगाएंगे या am? Am. Okay. So are is wrong here. Underline the word are beta and write down correct. I am. These days I am writing a book. Then students, seventh one. I shall paint it the window tomorrow. Here beta painted is wrong. I shall paint. Okay, underline the word painted and write on paint. I shall paint the window tomorrow. He has studying for 2 hours. Underline the word has. It should be has been. Okay, he has been studying for 2 hours. How has he finished the work so soon? The students, we can write down how has he finished. Okay, how has he finished the work so soon? Then students, when will you bought this book? When will you buy? Okay, when will you buy? B-U-Y. Underline the word bought and write down buy. B-U-Y. When will you buy this book? Like this students, try to complete worksheet number 3. Worksheet 4. Complete the following tense chart with appropriate forms of the verb give. बेटा इस टेंस चार्ट को आपको कंप्लीट करना है और फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन सी दे रखे हैं बेटा? गिव वर्ब दे रखे हैं बेटा हमें. बाय यूजिंग वर्ब गिव बेटा मेक दिस टेंस चार्ट. बेटा यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम वर्कशीट नंबर 2. ओके, वर्कशीट 2 में बेटा जैसे आपको टेंस चार्ट दिया हुआ है बेटा, अकॉर्डिंग टू दैट बेटा यू कैन prepare this chart also. Okay, I am giving you hint, but beta you have to try it yourself. Okay, first one beta, simple present. जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें बेटा, हमें गिव वर्ब है तो हम कैसे इसको यूज़ करेंगे बेटा? गिव और गिव्स, डज गिव, डज नॉट गिव. बेटा पास्ट अगर है तो गिव की सेकेंड फॉर्म क्या होगी बेटा? गेव. ओके, गेव. देन बेटा डिड गिव, देन डिड नॉट गिव. बेटा डिड के साथ अगर आप लगा रहे हो बेटा ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है. डिड गिव. ओके, एंड डिड नॉट गिव. देन बेटा फ्यूचर टेंस, विल गिव, शेल गिव. फ्यूचर टेंस के लिए हम बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल और शेल. देन बेटा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस, बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज, एम, आर. Suppose he is giving, I am giving, they are giving. Okay, is giving, am giving, are giving. For present continuous. For past beta, past continuous हम helping verb को change कर देंगे, was giving और were giving. Then beta for future, will be giving, shall be giving. And students for perfect tense, has given, have given. बेटा अगर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं then we use has, and if we are talking about plural then write down have. Has given, have given. And in past perfect students use helping verb had, H-A-D. Okay, had given. And for future perfect, will have given, shall have given. Like this students, try to complete worksheet 4. Okay students, I hope students all of you have understood well what we have done today. Now beta try to complete worksheet 1 to 4 in your practice book. Okay beta, that's all for today students. Thanks and have a nice day. Bye bye beta.